Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019. This was very much in news. So we will see what is this topic. एंड इसके ऊपर प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है और यदि प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं आता है तो डेफिनेटली मेंस में काफी हाई चांस बन जाता है इसके ये क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में। एंड थ्रू आउट द ईयर आप कह सकते हो कि बिफोर दिसंबर ये काफी न्यूज में था। आई थिंक फॉर 3 or 4 months or maybe 6 months this topic was in news. So we'll see what is this electronic cigarettes and why we have prohibited these electronic cigarettes in India. So this act replaced the ordinance promulgated in September 2019. So firstly, we have seen that ordinance has been passed to ban these electronic cigarettes. Okay, and after that, in December winter session, new act has been passed. Okay, to prohibit these electronic cigarettes. So we'll see what are these e-cigarettes or electronic cigarettes. So electronic devices that heat a substance which may contain nicotine and other chemicals to create vapor for inhalation. These e-cigarettes can contain different flavors too. It prohibits production of this act particularly. So e-cigarette वाले समझ लेते हैं। जैसे कि मे भी आप लोगों ने हुक्का देखा हो, हुक्का कैसा होता है? एक तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिगरेट्स होती हैं जिसके अंदर बेसिकली स्मोक निकलता है जिसके अंदर से। ओके, एंड उसमें बेसिकली क्या होता है कि काइंड ऑफ जैसे कि जो अनबर्न्ड कार्बन भी निकलता है, ओके, डस्ट काइंड ऑफ स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन भी निकलता है। ओके, दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर लंग्स एंड ऑब्वियसली सिगरेट्स या जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उसमें निकोटीन होता है। ओके, निकोटीन इज ए एडिक्टिव मटेरियल। निकोटीन को यदि आपके लंग्स में जाता है so you can get addiction to get that nicotine. Okay. And e-cigarettes का concept ये आया था कि that we want to get rid of these tobacco products. हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं जो भी tobacco product conventional tobacco product यूज करते हैं like जो smoke generate करते हैं basically like cigarettes, like बीडीज, like or you can say hookahs. Okay. But this e-cigarette electronic cigarettes are said that कि हम जो nicotine उससे fill up करेंगे that will be in liquid state. ओके, एंड उससे जो निकोटीन जाएगा उससे स्मोक उस तरह का जनरेट नहीं होगा, अनबर्न कार्बन और स्मोक जनरेट नहीं होगा। इट वुड बी लाइक एक पोल्यूशन फ्री स्मोक। ओके, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक तरह से, और इसमें लेकिन निकोटीन होता है, डेफिनेटली निकोटीन होता है इसमें, बट दे आर सेइंग दैट जैसे निकोटीन की टैबलेट्स भी आती हैं, आप लोगों ने शमे भी ऐड देखी हो कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट स्मोकिंग, सो यू कैन टेक निकोटीन दिस टैबलेट्स। ओके, टैबलेट्स में निकोटीन भरा होता है। इसी तरह से एक सिगरेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, so they are also contain these e-cigarettes also contain nicotine. Okay. But again, obviously it has nicotine, that is why it's a harmful also. Again, it's a harmful. So recently our government has banned these e-cigarettes, and what they have prohibited the production of e-cigarettes in India, obviously manufacturing, import, export, transport, sale, distribution, and advertisement of e-cigarettes in India. So all these things are banned in India related to e-cigarettes. So we can say that everything is banned related to the e-cigarettes in India. So now, what punishment they prescribed as per this act? यदि कोई use करता है या manufacture करता है या import करता है, export करता है, so what punishment has been prescribed and as per this act? ये भी आपको याद रखना है। So imprisonment of up to 1 year or a fine up to 1 lakh rupees or both. Okay, this has been prescribed. या तो imprisonment हो या जेल हो जाएगी 1 साल की, और fine up to 1 lakh rupees or both. This is for first time offender, जो पहली बार गलती करते हैं उनके लिए है ये, and for subsequent offenders, दोबारा गलती करते हैं उनके लिए, the person will be punishable with an imprisonment of up to 3 years along with a fine up to 5 lakh rupees. Okay, so उनके लिए imprisonment and fine बढ़ा दिए गए जो दोबारा गलती करते हैं। Subsequent mistakes or subsequent offences can cause further enhanced punishment.
So as an act enforces the owners of existing stocks of e-cigarettes will have to declare and deposit their stocks. तो जो भी जिनके पास ई सिगरेट्स के ऑलरेडी स्टॉक्स पड़े हुए हैं उन सबको अपना स्टॉक्स सबमिट करवाना होगा, ओके, to the concerned authorities. If any person stores any stock of e-cigarettes after the passage of this act, he will be punishable with an imprisonment of up to 6 months or a fine of up to rupees 50,000 or both. जिसके पास भी स्टॉक्स पड़े हैं सिगरेट्स के उनको जमा करवाएं और यदि जमा नहीं करवाते उनको पड़े रहते हैं then they will be liable to punishment of up to 6 months and fine of rupees 50,000 or both. Now why this ban? Why they banned these e-cigarettes? What are the reasons? Obviously it has some adverse effect and that's why we are making a ban. So the reasons are, well, first of all, the health risks. Health risks like heart attacks, cancer, pulmonary diseases. Pulmonary disease means like disease related to respiratory disease, lung diseases. So this disease can caused due to the taking of these e-cigarettes. And due to presence of volatile organic compounds, VOCs, heavy metals like nickel, tin, lead, etc. So because of these health risks, we have banned these e-cigarettes. And apart from that, we have also found that there is an increase in number of teenagers resorting to consume it. Because now more teenagers are taking these e-cigarettes. Okay, and that is why we don't want that our youth is indulged into these kind of activities, tobacco consumption or nicotine consumption, and that is why we have banned it. Next reason is the misconception amongst smokers of it being less harmful than other forms of tobacco. So ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे misconception कि जो ई सिगरेट कंज्यूम करते हैं उनको हार्म कम होता है और जो कन्वेंशनल जो कंज्यूम करता है बीड़ी या सिगरेट्स उनको बेसिकली हार्म वो ज्यादा होते हैं. It's a misconception, and that is why we are banning it, because now individuals or now youth is treating that e-cigarettes are safe, and that's why we can consume it, okay? And that's a misconception. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.